recording is paused. I think आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके आगे आपने कुछ अच्छा, you think recording is paused. Okay. So आप सबके लिए एक एक्टिविटी है for everyone. Shall we do it? Yes? Okay, okay, okay. So let us just close our eyes. Close your eyes. Everyone, let's do this together. Let's close our eyes. And you are sitting in a beautiful room. That's your drawing room. You are chilling in your drawing room, listening to some beautiful music and reading a lovely book, relaxing and chilling. And it's been quite some time, and you are having the best time of your life. Suddenly, you are feeling thirsty. So please close your eyes and imagine, visualize all this is happening. So suddenly you feel thirsty, and you have decided to get up. So you get up, and now you're wearing your slipper and you walk towards the kitchen, and you open the fridge door because you want some chilled water. जैसे ही आपने फ्रिज डोर को खोला, उसमें देखा एक प्यारा सा नींबू रखा हुआ है, नाइस लेमन. So you are suddenly tempted, and the smell of the lime is so refreshing and it is so tempting. You can't stop it. So just to refresh yourself, you've taken that lime out of the refrigerator. You closed the door. You put that lime on the chopping board and you are going to cut it. And you look at the lime. It's nice and fresh, so fragrant, such lovely smell and so refreshing. And you just want to taste it. So you have just put 4 to 5 drops of lemon in your mouth. Ooh, it's so sour. Did anyone taste the lime? You just poured those 4, 5 drops in your mouth. And suddenly, right now we are doing online. So, ma'am, Shivani ma'am, could you taste the lime? I could see the expression on your face. Did anyone taste the lime? You you can really, like when I was narrating it, it was like I could taste the lime. So what is happening? Sir, could you taste the lime? Multani sir? थोड़ा सा लग रहा था कुछ लाइम के जैसा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा. थोड़ा So थोड़ा what नहीं, is ज्यादा ही लग happening? रहा था Where is the मेरा. lime? Where is the lime? Where is the lime? Lime is not there. Everything is here. So stress is also here. So the moment, if we think of a beautiful garden, this can take us anywhere. This can take us anywhere in the world. So the moment you just disconnect from what's happening around you and you want to be in a happy space, this takes. So the brain is actually, it can take you anywhere. So even in the middle of the most stressful situation, if I'm roaming around in Paris or some beautiful place in a lovely garden with everything beautiful, maybe I'll not feel that, anxiety and that panic state which I could have otherwise felt. So because we have this power to choose, we decide what we want to experience. Whether we want to experience stress, जैसे नीलेश सर ने अभी शेयर किया, or we want to stay calm and composed. So कुछ कुछ आपके पास strategies हैं जो which I want to share with everyone so that we can really, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ कुछ और चेंज करने हैं, तो let us really understand how to have such habits
which can help us become stress free. So can you see my presentation? Can you see my presentation? No? Okay. तो कितनी No, बार not ऐसा yet, होता ma'am. है कि Not we want not yet. to adopt new habits कि चलिए ठीक है, मेरी स्ट्रेस बड़ा अच्छा मैनेज हो रहा है, लाइफ बड़ी अच्छी मैनेज हो रही है, फिर भी हमेशा देयर इज अ स्कोप टू लर्न समथिंग न्यू। तो चलिए मुझे एक नई हैबिट अडॉप्ट करनी है। तो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 2-3 हैबिट्स व्हिच कैन रियली हेल्प अस बिकम बेटर मैनेजर्स ऑफ आवरसेल्व्स। तो मैं तो इसलिए बोलती हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, because we are the effective managers। कल जैसे हमने कहा था, we are the leaders, we are the effective managers। so जब हमको लाइफ की सारी चीजें मैनेज करनी है, why not stress also? So let us see how can we adopt these 2-3 techniques। तो जब भी हमें किसी भी न्यू स्किल को अडॉप्ट करना होता है, तो या न्यू हैबिट को अडॉप्ट करना होता है, देयर आर बेसिकली 3 थिंग्स दैट आई शुड बी नोइंग अबाउट। आई वांट टू डू इट, सबसे पहला क्या है? आई वांट टू डू इट। सेकंड इज आई शुड नो हाउ टू डू इट। And third is I should know why should it be done। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, डिजायर, वांट्स एंड स्किल्स। अगर आपके पास डिजायर, वांट्स एंड स्किल हैं, तो आप कोई भी नई हैबिट को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज एज सिंपल एज दैट। यू शुड हैव द डिजायर, यू शुड हैव द स्किल एंड यू शुड नो हाउ टू डू इट। तो एक, just a minute, share, yes। So this is my favorite। I'm going to talk about being proactive। अब इसके लिए बड़ा important है, हम लोग सब, all of us are active। All of us, we think we are active, yes or no? We are Yes, active, Yes. yes, ma'am. Yes, ma'am. all Yes, are ma'am. active, but active Yes, ma'am. people are Yes, also of ma'am. 2 kinds। आपको पता है, 2 तरह के एक्टिव लोग होते हैं, या तो प्रोएक्टिव और या फिर रिएक्टिव। Proactive people, what do? They take action before something is to take place, and reactive people, they will take action after the incident has taken place। तो स्ट्रेस किसको ज्यादा होने वाला है? रिएक्टिव लोगों को। बिकॉज इफ somebody has to prepare for the examination, पहले से नहीं पढ़ा, तो अब एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो फिर रिएक्ट करेंगे, आई शुड हैव स्टडीड, आई कुड हैव डन दैट, आई कुड हैव। ये रिएक्टिव है। और जो प्रोएक्टिव है, उन्होंने पहले पढ़ के फटाफट, स्ट्रेस तो अभी भी हो रहा है, स्ट्रेस तो बाद में भी हो रहा है, तो जिन्होंने स्ट्रेस के साथ प्रोएक्टिवली पढ़ लिया, दे आर गोइंग टू सक्सीड। और जो स्ट्रेस बाद में करेंगे, उनको स्ट्रेस भी होगा और काम भी नहीं होगा। सो प्रोएक्टिवनेस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये है आपकी प्रोएक्टिवनेस। तो आप अपने आसपास के लोगों को सुनिएगा, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज आर पीपल सेइंग। आर ये दे टॉकिंग लाइक दिस? कल हमने कहा था इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। सो दिस इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन that you must be, you could be listening to this kind of language. That's just the way I am. They make me so mad. I have to do that, I can't, I must, if only, there's nothing I can do। ये सारी reactive language है। और proactive language है, let's look at the alternatives। I can choose a different approach, I control my own feelings, I'll choose an appropriate response, I decide, I choose, I prefer, I will। ये सब चल रहा है। Oops, I think you couldn't see my PPT, right? No, ma'am. Okay. This is the language of the reactive people। There's nothing I can do। मेरे से हो ही नहीं सकता। ये रिएक्शन आ रहा है आफ्टर द इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस। तो बच्चों को जरूर समझाइए कि वो आप हम तो वी आर एडल्ट्स, वी कैन मैनेज स्ट्रेस,
but we should understand these tricks and techniques so that we can transfer this to our students who are stressed most of the times. They do not take action at the right time, और बाद में उनके रिएक्शन आते हैं. तो रिएक्शन इज एब्सोल्युटली, फिर वो रिएक्शन आने के बाद भी कुछ फायदा तो हो नहीं सकता है, बिकॉज द इंसिडेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. सो व्हाट आर दे डूइंग एक्चुअली? जो प्रोएक्टिव पीपल हैं वो फटाफट न्यू सिचुएशंस में दे विल चेंज देमसेल्व्स, दे विल टेक challenges as learning opportunities. They are confident, strong and in control, and they will be closer to purpose in life. Reactive people के लिए नई प्रॉब्लम, नया कोई आया कि it becomes a problem, and to take action to solve that problem is a big challenge for them, and they will feel stressed. They don't want to act. They are in their comfort zone, and you stretch them out of their comfort zone, they will get into panic zone. So they do the work. ये reactive people हैं, ये कर रहे हैं काम, पर ये stress में काम कर रहे हैं. और जो inactive people हैं, जो ना proactive है ना reactive हैं, जो inactive हैं, उनको तो काम ही, उनको नई situations है, they are scared. They are too stressful. They just need to avoid, and they cannot cope. So because my mental state is like this, they are in the state of denial, और उनको comfort zone से बाहर आने में डर लगता है. And then because they are not doing anything, they are constantly stressed and weak and powerless with self-esteem, low self-esteem. So very important to identify between proactive, reactive and inactive people. Because कभी कभी स्ट्रेस इज बिकॉज इनएक्शन. अब बच्चों ने पढ़ा नहीं, अब स्ट्रेस हो रहा है, तो भैया आपने पढ़ा ही नहीं जब, तो स्ट्रेस तो होगा ही. Had you been proactively studying for the test, you wouldn't have felt stressed at this time. फिर आपको जो स्ट्रेस होता है वो भी पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, बिकॉज थ्रू दैट स्ट्रेस यू आर रिवाइजिंग, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स. तो ऐसा कहा जाता है कि आपके पास 30 आवर्स हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो आप उसको 30 आवर्स में भी करोगे, और 3 आवर्स हैं तो 3 आवर्स में भी करोगे. So because 30 hours में रहने से भी inactive people will not do that work. So many times we have to identify why are people getting stressed. Why you can manage stress, but there will be others around you who are not able to. So whenever you are, it is very important कि proactively अगर हम काम करेंगे, तो proactiveness के लिए we should have some kind of goal. तो if I ask you all, जो आप यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, what is your goal? कोई भी एक गोल आप मुझे बता सकते हैं, as a teacher, as a professor, as I mean at home, कोई भी one goal that I'm really working towards. Any one goal. I have to complete my thesis, or I have to handle children with I have to understand NEP, या कोई भी whatever could be one goal. Or I have to lose weight, or I have to travel abroad. Any goal. So suppose if I say I have to lose weight, keep everyone around happy around me, amazing, very good. So आपका जो गोल है, अब आपको वो गोल मिलेगा कैसे? So suppose if I say that I have to be stress free, I have to keep others around me stress free, I have to complete, yes, yeah, whatever is my goal. So it is very important कि आपका गोल स्पेसिफाई कीजिए. आई वांट पीस फॉर द नेक्स्ट, पहले कितने दिन, क्योंकि हम पीस इटर्नल लाइफ लॉन्ग तो नहीं अभी से मेजर कर सकते, बट आई कैन से दैट आई वांट अ पीसफुल वीक. तो मेरे को ये हफ्ता बड़ा पीसफुल चाहिए. वेडनेसडे ऑलरेडी हो गया, आई वांट माय थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे टू गो वेरी पीसफुली. सो ये आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आई एम प्लानिंग फॉर माय नेक्स्ट 4 days. हाउ विल आई मेजर
I want peace so that I should not get stressed. My days should be calm. तो आपने you have made that conscious decision to to be at peace and to be calm. तो ये आपने decide किया. अब ये अटेनेबल है क्या 4 दिन में? डेफिनेटली अटेनेबल है. इज इट रियल? यस, इट इज अ रियल गोल. And you have given it a time period of 4 days, so definitely it can be worked out in 4 days. Now, beginning from this moment, you have decided to be at peace. तो आपको अब ये आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपने पिछले हफ्ते में सो कितनी बार आप स्ट्रेस में आए, और इस 4 दिन में आप कितनी बार स्ट्रेस में आए. इज देयर अ इम्प्रूवमेंट? अब आप कम टाइम पर स्ट्रेस में आ रहे हैं. तो अगर इफ यू आर गोइंग टू मेजर दिस, then over a period of time you will realize that yes, gradually you are learning to be at peace even in stressful situations. पर अगर आपने measure ही नहीं किया, अगर आपने specify नहीं किया, general रखा, शायद कुछ something sometimes, तो फिर हमारा result भी वैसा नहीं आता what we expect it to be. So if I, in this week, suppose if you start in this week that I felt stressed 7 to 8 times, now next week I have to ensure that in 8 days I feel stressed only for 4 times. So first time hoga aapka trigger, to aap, you will take control. Second time you will take control. Third time avoid, so that fourth time does not arise. So very important to be specific and very important to measure. Then only whatever result you have opted or you have visualized for yourself, that can be attained. Yes, okay, thank you so much. So your goals should be there. अब क्या हो रहा है कि आपका एक goal है to be at peace. So proactively you are going to be working towards that goal. पीस के लिए. नहीं तो पीस मुझे तो मिलेगी नहीं अगर मैंने प्रोएक्टिवली एक्शन नहीं लिया. तो पीस की जगह मुझे डिस्टर्बेंस मिलेगी, एंड देन आई विल बिकम रिएक्टिव. So peace is my goal. I have to be proactively working towards it. Yes, absolutely. And with smart sir ne likha. So this is a smart goal. Visualize what you want. You want peace. You visualize that peace. You visualize yourself relaxing. You train yourself, because everything happens twice, once in my head and once outside. So, proactiveness is just that first step towards taking personal leadership. I have visualized certain things in my life. I will proactively take action towards those steps, and I'm going to make them happen in my life. Manifestation will take place. So, visualization. So, if you are visualizing that you are having a wonderful Sunday, a wonderful Saturday, each day begin with this visualization, because mind thinks in images. और जो हम सोचते हैं वही सामने रिक्रिएट होता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट वी विश टू हैपन. क्योंकि अगर अगेन प्रोएक्टिवनेस एंड विजुअलाइजेशन बोथ आर कनेक्टेड. अगर मैं विदाउट एनी एक्शन आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग, मेरे गोल्स ऐसे हैं कि मैं, जैसे मेरा, मैं अगर बोलूं कि मैं पायलट बन जाऊंगी और एक दिन मैं देख रही हूँ कि आई एम फ्लाइंग एन एरोप्लेन, और तो आई इट कैन नॉट कम ट्रू बिकॉज इट इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल. तो ऐसा विजुअलाइजेशन विल नॉट वर्क. But I want peace, I want happiness, I want children to do well, I want my students to get good jobs, I want prosperity, I want this. तो ये सारे गोल्स जो हैं आपके, ये विजुअलाइज करके और प्रोएक्टिवली एक्शन लेके दे कैन बी अचीव्ड. अदरवाइज अगर हम ये नहीं कर रहे हैं प्रोएक्टिवली, then we are reacting after the situation has taken place, and reactive people are going to be always stressed.
So either become proactive or we are reactive. जैसे हमने communication का कहा था कि either it is communication or it is miscommunication. So either we are proactive and taking control of things beforehand or we are reactive. Then we are reacting after the incident has taken place. Is this clear what we have just shared? Madam. Yes? Yes, ma'am. Yes, Does ma'am. this make sense? Yes, ma'am. Yes? Ma'am. Okay, thank you. Yes. Thank you so much. Very true. Yes. So I'm just going to share the next. तो क्या होता है कि विजुअलाइजेशन जब भी मैं तो आई ऑलवेज से कि इफ यू आर गोइंग फॉर द क्लास यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ क्लास यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग यू आर गोइंग फॉर अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन एनीथिंग आपके पहले से अगर आपने विजुअलाइज किया हुआ है व्हाट काइंड ऑफ आउटकम डू यू वांट टू सी एट द एंड ऑफ इट यू विल एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ आउटकम तो विजुअलाइजेशन दो तरह का हो सकता है एक तो प्रोसेस का कि अगर मुझे बच्चों को क्लास में आई हैव टू गिव देम अ लॉट मोर वैल्यू तो आउटकम क्या है मोर वैल्यू अब उस आउटकम के लिए देयर हैज टू बी अ प्रोसेस सो हाउ एम आई गोइंग टू ऐड मोर वैल्यू दैट प्रोसेस कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड and when I have visualized the process proactively I'm going to start working in that process and then you will see that everything becomes a joy and you won't feel that stress so research has shown that visualization can help improve your performance and there are two forms of visualization process and outcome. तो मुझे आउटकम क्या चाहिए मुझे पीस चाहिए आउटकम दैट इज आई नो द रिजल्ट इज पीस बट उसके लिए प्रोसेस क्या होने वाला है मे बी आई हैव टू गेट अ 15 minutes अर्ली मे बी आई हैव टू ऑलवेज मेंटेन माई calmness maybe I have to give instructions beforehand in a very clear manner so that nobody misunderstands what I'm trying to convey so ये सब process अगर place में है the outcome will be what I desire it to be. Yes, visualization. Do you think it will help? So, one is proactiveness, and the second is visualization. Ab hoga kya? Hello. Is this process of visualization clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Ma'am. So the third step is very simple. आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए अब आपके पास अर्जेंट बहुत सारी हो जाएंगी नॉट अर्जेंट बहुत सारी हो जाएंगी और कुछ वेस्ट भी होता है टाइम वेस्टर्स भी होते हैं सो ऑलवेज be in this second quadrant. The second quadrant is all about ये हमारा time management का कहते हैं कि time is not managed. We manage ourselves. So how do I manage myself in those 24 hours is going to decide how effectively am I leading my life. तो अगर मेरे असाइनमेंट सारे लास्ट मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं मेरी इमरजेंसीज लास्ट मिनट पे सो दिस अंडरस्टैंड ये भी हमें हमेशा क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारा जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्जेंट का है वो कभी भी आ सकता है दैट अर्जेंसी कैन क्रॉप अप एट एनी टाइम but if I'm already done with my second quadrant, then this urgency will not hamper my work. पर अगर मेरा खुद का ही काम complete नहीं हो रखा है and there is some urgency, my stress level, my BP, my anxiety, my panic is going to shoot up like anything. तो जब हमें टाइम मिले एंड इफ वी कैन बी prepared for this second quadrant then our life is going a little smooth. I know there are many things to be done and for everyone you are managing families you are managing professional life you are managing so many things we all have done I can say that I'm already out of that phase where we were managing so many things on so many different fronts successfully. So we can say that this always being ahead of time.
always being very well planned, always being proactive, always being having that visualization, having that goal, always being in this quadrant of being effective and planned. So the other things automatically got taken care of. But अगर हम वो नहीं करते, so there are many people who are still struggling to find ropes in life कि कैसे करना है. So through this session, first we create awareness, we get this awareness that this is important, this can be done, and then we share this awareness with others. Nilesh, do you want to say something? I can see here Nilesh sir speaking. Nilesh sir? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So this is extremely important and very, very crucial. और एक और बहुत ही crucial चीज होती है हमारी लाइफ में, पैसा is very important. Most of the times we feel that we all are working to become rich in certain ways, but money is not everything. So there's a beautiful story. There was an old man and he was living by the sea, 85 years old man. और वो सी के अपनी एक हट में वो रहते थे, और always happy. He didn't have any problem with anything in life. So जब देखे तब उनका चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ, खुशनुमा, और full of life, full of energy, full of positivity. So some passers by came and they said, Are, you are so happy. I'm sure you must be having a lot of wealth. He said, No, I don't have much wealth. I just have enough on which I can survive. They said, Oh, that means your spouse must be giving you a lot of happiness. He said, No. My wife passed away 20 years ago and I live all by myself. Oh, your children take very good care of you. He said, No, my children don't stay with me. They are all in their respective places. तो बच्चे तो मेरे साथ रहते ही नहीं है. Oh, then you must be keeping very good health because that is what is keeping you so happy. He said, No, what good health? I'm 85 years old. I have all pains and aches everywhere in every part of my body. He said, Then what keeps you happy? How are you so happy, so joyous, so cheerful, so energetic, and so enthusiastic? He said, Every morning I see the rising sun, and the rising sun, I'm always there when the sun is rising. And the rising sun asks me a question: How is your day going to be today? Are you going to be happy or are you going to be complaining? And I take the decision. I tell the sun that I decide, I choose to be happy, and that decision helps me stay happy, cheerful, positive, energetic throughout the day. So again, the choice is in my hand, what I decide to be. So finances, financial health is very important, but it is not everything. खाली पैसा सब कुछ नहीं है. Sometimes we may be putting in a lot of effort to earn more and more, and then we realize, अरे मैं तो family के लिए ही सब कर रही हूँ, but my family members are not happy with what I am doing, because there has to be a balance. So it is not only about finance, it is about career, it is about spirituality, it is about personal growth. What kind of social circle you have, how much time you are taking out for fun and recreation, health kaisi hai aapki, and family is there to support you or not. When all these 8 areas are taken care of, then we can say, I'm happy. So if I'm happy, that is amazing. But if others around me are not happy, then what do I do with that happiness? I'm going to be stressed again. So it is in totality that we have to really
It is in totality that I have to be, happy. यस, अरे वाह, अपने आप भी हमेशा खुश रहते हैं मैडम, आप फ्री होके स्पीच देते हैं। अरे वाह! सो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस किसी के पास नहीं होते, चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं। एंड एवरी डे बिफोर द सेशन आई एम प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई हैव रिटन अ बुक, आई एम राइटिंग अनदर बुक एंड टू मेनी थिंग्स टेकिंग प्लेस। बट बिकॉज़ प्रोएक्टिव है, तो मैं आज का काम आज नहीं कर रही हूँ। मैं 4 दिन बाद का काम टुडे आई एम डूइंग। So, because tomorrow I have another workshop, day after tomorrow I'm traveling, then there is another workshop, and like last week also turned out to be like that. So, today I'm not working for today, I'm working for what is coming 4 days later. And that keeps me at peace, and that keeps me happy, and that gives me the freedom to choose and freedom to decide. So, everything, you make that choice कि आप ये बैलेंस कैसे करने वाले हैं, and no, nothing, no aspect can be left neglected, because everything is extremely important and crucial. एंड फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फैमिली अगर आपकी खुश नहीं है तो फिर आप, अभी तो हमने कोरोना में देखा कि माय गॉड, हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज कितना भी पैसा हो जाए, अगर हमारी हेल्थ इज नॉट गुड इनफ, देन दैट मनी इज नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग फॉर अस. So every aspect, you all are young, you all are dynamic, you all are so high spirited, so take care of all these things. This is really important and crucial, I'm telling you, it works. So whenever, every morning, when you are, health is, again, if we want to maintain good health, it is not just what you are eating, it is also what you are thinking, what you are saying. And I follow this to the T, because everything that we think and say, mere cells, are they happy, or mere body is made up of 60 trillion cells, and for body to be working in complete harmony, the cells have to be together in harmony with each other, the cells have to be happy, then your lives are happy. So what you are thinking, if your cells are getting demotivated with what you are thinking, they are not going to function the right way. So always stay energetic, positive, happy, enthusiastic, so that the body also responds in that same way. So it is not only about what we are eating, it is also our emotional health, mental health. So health is also in 4 dimensions. The first is the physical health, emotional health, mental health, and spiritual health. So if you are taking care of all these four, then you can say that you are leading a very happy, fulfilling life. तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ. Again, you must have heard this story many a times कि एक वुड कटर जंगल में वुड काट रहा था. थैंक यू सो मच. तो वो रोज पेड़ काटने जाता था. तो पहले दिन गया, उसने 10 पेड़ काटे. दूसरे दिन गया, उसने 5 पेड़ काटे. तीसरे दिन, आई डोंट नो इफ आई हैव शेयर्ड दिस स्टोरी ऑलरेडी. तो जब अगल बगल बड़ा वो दुखी हो गया कि पहले दिन तो मैं 10 कर सकता था, अब मैं नहीं कर सकता हूँ. तो somebody was passing by and that person said, why are you so upset? He said, I could do 10 trees in the on the first day, but now I can do only 5. तो इस पासर भाई ने कहा, आपने अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन किया कि नहीं? अगर आप तो वही एफर्ट्स कर रहे हो, but if your saw is not sharpened, then how is the result going to be effective? Then this woodcutter understood, yes, मुझे अपनी कुल्हाड़ी को sharpen करना चाहिए, और कुल्हाड़ी sharpen की. So his, his effectiveness became good again. तो वैसे ही आप सब wonderful, amazing people are
वर्किंग, आप फैमिलीज में, आप कॉलेज में, आप फ्रेंड सर्कल में, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले कर रहे हैं. पर कितनी बार क्या होता है, बिकॉज वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स विच वी हैव टू डू, हम वांट टू डू के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि कंपल्सरीली करना पड़ता है, हैव टू डू हैव टू डू हैव टू डू. तो वांट टू डू, जो मेरी इच्छा है करने के लिए, वो मैं उसके लिए टाइम कैसे निकालूं. तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है. And you should look after your physical health, your mental health, your emotional health, your social health, your intellectual and spiritual. तो जैसे अभी कोविड टाइम्स में डॉक्टर्स वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, फैमिलीज वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, डॉक्टर्स हैव टू डू 6-7 months तक उनका हैव टू डू चलता रहा. After that, because they did not get time what they wanted to do, they, some of them really faced very tough times. So हमारे को हमेशा we have to maintain this balance. I want to do exercise. I want to look after myself. I want some free time for myself. I want to have friends, fun with friends. I want to have a good family time. तो क्योंकि ये want to आपका listed है, आपको जो responsibilities have to करनी है वो आप खुशी खुशी कर लोगे, क्योंकि आपका incentive ही want to आपके लिए wait कर रहा है. तो मोटिवेशन कहीं और से चाहिए ही नहीं. लेट मी कंप्लीट दिस सो दैट आई गेट मोर टाइम फॉर व्हाट आई वांट टू डू. लेट मी डू दिस, एंड व्हेन वी आर डूइंग इट वी शुड डू इट विद सो मच ऑफ फोकस एंड डेडिकेशन दैट द वर्क गेट्स डन इमीडिएटली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो कभी भी वांट टू को निग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हम वांट टू को निग्लेक्ट कर देते हैं तो हम अपने आप को निग्लेक्ट कर देते हैं. And when we neglect ourselves, then we are somewhere compromising. So that is not good. So look after your intellectual health, physical health, emotional health, spiritual health, so that you can deliver to the best of your capacity. अगर एक कार भी हमने खरीदी है and car may not be functioning at the same capacity throughout the maybe अब 2 साल में गाड़ी बैठ जाएगी, आपको 1 साल में 6 महीने में आपको सर्विसिंग के लिए ले जाना है उसे. तो सर्विसिंग is like sharpening the saw. So for things that you want to do are sharpening the saw for you. So make time for those things because they are extremely important and very, very crucial. Yes? So हमारे को अगर स्ट्रेस फ्री करना है अपने आप को और अच्छी ऑलरेडी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में वी आर वेरी गुड बिकॉज वी आर मैनेजिंग लाइफ्स वेल. बट और भी अगर अपने को शार्पन करना है, अपनी स्किल्स को शार्पन करना है, so let's find more time for what we want to do, and that will give us the incentive to excel in our responsibilities also. Does this make sense? Have to do, want to do. क्योंकि मुझे Yes, लगता है कि yes. हम सारे टाइम हैव टू डू में ही रह जाते हैं. वांट टू डू हमको लगता है गिल्ट है कि वांट टू डू, आई वांट टू हैव टाइम वाला हम करते नहीं है. बट यू शुड हैव व्हाट यू वांट टू डू. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So the moment, so anybody's feedback, what you would like to share from your side? Yes, I can see all the, yes, this makes sense. So whatever you are feeding your mind, whatever you are telling yourself, that will lead your life. So remember, पहले तो हमको ये समझना है. So what did we do today? We understood कि stress जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है. दैट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल कि स्ट्रेस पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव स्ट्रेस कीप्स अस मोटिवेटेड एंड कीप्स अस, गिव्स अस डायरेक्शन. पर पॉजिटिव स्ट्रेस हमेशा सबके साथ नहीं होता है. कभी कभी स्ट्रेस नेगेटिव होता है तो इट अफेक्ट्स अस एडवर्सली आल्सो. And then to avoid that negative stress, we should always be proactive. और प्रोएक्टिव होने के लिए वी शुड हैव आवर गोल्स वेरी वेल विजुअलाइज्ड. सो गोल्स विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तभी आप प्रोएक्टिवली वहां पे काम करोगे. और जब आप प्रोएक्टिवली करोगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली यू विल सी that your time, you're managing yourself in such a way that you are finding time for want to do
and what you have to do. Okay? So, thank you. That is what I wanted to share from my side. If you have anything more to add, please feel free to add. And if you want to give any kind of feedback, please feel free to share your feedback, some of the tricks and techniques that we have done today. We started 15 minutes, but I just wanted to be on time क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब काफी सारे मतलब you also must be a little stressed out हो जाते होंगे आप लोग कर सुन सुन के. No, Anything you would like to mention from your side? What has been your feedback, your takeaway, your learnings? We have done 3 days. So first day हमने communication किया, फिर हमने Excuse me, ma'am. interpersonal, intrapersonal किया, then we did stress management today. Excuse me, ma'am. Yes, please. Actually, I want to know how you become so energetic, ma'am. Because from the last three lectures, we are seeing your face is very smiling and you are very much active during the delivering the lecture. And I'm What is the always secret like this. behind? Whether Okay, I'm okay. I'm so happy that you noticed this. ये मेरा 90 minutes का lecture है तो भी I'm like this, and if I'm taking 6 hours session तो भी I'm like this. So you know why? Why does it happen? जो मैंने Yes, आपको 4 yes. चीजें end में बताई थी ना, physical, mental, intellectual and emotional. So emotions से जो हम चीज करते हैं ना, वो हमारा passion बन जाता है because it is coming straight from the heart. So this is passion for me, and this passion gives me energy. So I am so energetic, and because this is what I want to do, so this gives me that it becomes a motivation. And anything, so this becomes your unique personal significance also. Anything which you do from the heart will become the passion for you. So teaching and training is passion for me. I do it from the heart. So, and every session is customized. ऐसा भी नहीं है कि मैंने जो एक मॉड्यूल बना के रख लिया, I can continue with the same module. No, I cannot do that. I have to keep changing it. But I put my heart and soul in it. So that gives me the energy. एंड यू ऑल आर वंडरफुल पीपल. आप इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस दे रहे थे, इतना मुझे वहां से सो मेनी इमोजीज आई कुड सी. सो दैट वर्कड एज एन इंसेंटिव, दैट वर्कड एज मोटिवेशन फॉर मी. And being involved, I think it really, yes, thank you. So आप लोग का जो feedback था throughout, आप भी उसमें लिख रहे थे, you were taking out time to write, so that was such a big motivation. Chat box देखिए, it is so full every day. First day से आप लोगों ने इतना encouragement दिया कि you Ma'am, know your it, lecture is very you are actually very. ma'am, your lecture is very connecting, means it connects the people, his feelings, emotions, and all. Very Because it it is. Yes. it's very means connecting means that after listening a lecture we feel very happy and means इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता कर जाता है, बहुत ही मतलब एनर्जेटिक फील होता है. इवन इन द वी योर लेक्चर इज इन द सेकंड हाफ, बट वी फील वेरी एनर्जेटिक आफ्टर लिसनिंग यू. थैंक यू सो मच. आई थिंक बिकॉज मुझे बस ये मैं कोशिश करती हूँ कि वट एवर इज देयर इट शुड गेट ट्रांसफर्ड टू यू. एंड स्क्रीन में जबकि एनर्जी को ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है बिकॉज अदरवाइज द फॉर द एनर्जी अगर लाइव हो then we can experience, we can feel the energy, but through the screen that energy to transfer, it requires a lot more efforts. So हम हमेशा but मैडम के लेक्चर्स पोस्ट लंच सेशन में ही रखते हैं पार्टिसिपेंट्स. मैडम इज अ रेगुलर फैकल्टी फॉर प्री पीएचडी कोर्स वर्क सिंस लास्ट 3 to 4 years. और yes, I मैडम think thank के you. कंटिन्यूस 10 लेक्चर्स होते मैम हैं आपकी 3-4 दिन स्माइल में. बहुत अच्छी है. Thank you, Preeti आप, ma'am. आपकी और मैडम के पास ना बहुत सारा भंडार है. आप मैडम के वर्कशॉप्स भी होते हैं. मैं मैडम का नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. जी मैम. यस, मैडम के पास इतना ज़्यादा कंटेंट है. और राइटिंग स्किल्स जो मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग मैडम पढ़ाते हैं पीएचडी स्कॉलर्स को,
वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, मतलब मैंने खुद ने भी बहुत सारी चीज़ें मैडम से सीखी है, एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न ऑल्सो। एंड बुक राइटिंग, मैडम का एक बुक बहुत ही अच्छा अभी जस्ट लॉन्च हुआ, टीचर्स के ऊपर ही है वो, इसलिए मुझे वो बताने की ज़्यादा इच्छा हो रही थी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल द थैंक थ्री यू मैम। डेज सेशंस, वंडरफुल सेशंस मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू। मैम और मैं प्रीति मैम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि दिव्या जैसी मैम ने हमें आज गाइडेंस दिया है, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू मैम। थैंक यू। ओके। थैंक यू थैंक सो यू ऑल ऑफ यू। मच। थैंक यू सो मच मैम। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो आपका फीडबैक तो बहुत, और आपने फर्स्ट डे से जो फीडबैक दिया है ना, दैट आई थिंक वर्कड एज अ वेरी बिग मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी। सो आप पार्टिसिपेंट्स भी अच्छे हैं, बैच भी अच्छी है मैडम, दे आर इंटरैक्टिंग। बहुत अच्छी। After listening you, ma'am, we feel that we are in a very comfort zone. हाँ। That is important. Actually, in any of the lectures, this is the main part. One way Yeah. Very- communication रहा तो वो Thank you, बोरिंग हो जाता है। thank you very much, ma'am. And प्रीति मैम आपको भी बहुत thank you. बहुत अच्छा सेशन है ये. ओके चलिए, थैंक थैंक यू यू। मैडम, We रुकते wish हैं we यहाँ could पे। continue with the same lectures in future also. यस यस, अगले वीक में अपन एक लेक्चर और लेंगे मैडम का, अभी थोड़ा सा टाइम शेड्यूल में चेंजेस हो गए थे, अदरवाइज पहले दिन मैडम के 2 लेक्चर्स प्लान किए थे, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल बदलना पड़ा, तो एक लेक्चर मैडम का अभी बाकी है। तो नेक्स्ट वीक में जैसे ही स्लॉट मुझे मिलता है खाली, एक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मैडम अपना बच्चा है ना, तो वो वाला हाँ, नेक्स्ट वीक में आई लेट यू नो, जैसे ही अपना सूटेबल स्लॉट रहेगा we will meet. So thank you so much, बिल्कुल ma'am. Thank you from all the participants also. I extend my thanks to Mrs. Divya Lakhera, madam, for spending valuable time, sharing valuable information, and thank you so much, ma'am. Thank थैंक you. यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय Bye bye. एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू मैम। बाय बाय थैंक मैडम, यू। थैंक यू मैडम। Take care थैंक of यू। yourselves। Thank you, Take madam. very good care of